सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार कंप्यूटर फैकल्टी आप सबका स्वागत करता हूँ। सो गाइज, इफ यू टॉक अबाउट इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस गाइज, इफ यू टॉक अबाउट इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट a very important thing guys. So let's see, already you have guesses guys what I'm going to discuss in this session. So in this session I'm going to show a very important topic from the UGC NET paper 1 guys. Okay, so guys, if we talk about that entire syllabus, either it's paper 1 or paper 2, it's the very big guys. Okay, but guys, once you're preparing for the UGC NET exams, so no one going to be complete the entire subject guys, no one going to complete the entire syllabus guys. So for that problem, and also able to see many aspirants getting confused, many aspirants are demotivated when they didn't completed the entire syllabus guys. So don't worry about that. In this session I'm going to show all those important topics. So अगर आप ये सारे टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं, no one going to stop you. Okay, easily you are able to mark all those questions guys. Okay, because whatever I'm going to discuss, these all are the important and always questions are coming from that section guys. Okay, so let's see guys what we are going to show here. So before starting, let's see the brief introduction about me. If you talk about, I am Chandan Kumar Sten, professor of the computer science. If you see here, I got qualified NET, GATE, BR State for computer science. If you talk about my qualification, I did MC from Pondicherry Central University. And if I talk about my experience, I have more than 2 years of experience in IT as software developer, as well more than 3 years of experience in the teaching experience guys. You see, this is all about my achievement. Okay guys, so let's see what we are going to see here guys. Okay, so we are going to see one by one as well, unit wise. Okay, so see guys, if we talk about that unit 1 as well the unit 2 guys, so if you see the unit 1 having the teaching aptitude guys, we talk about the first one having the teaching aptitude. If you see the teaching aptitude, they having the lot of syllabus, lot of topic as well soft topic, but I am selecting some important as well. You are able to accept the question from that section guys, always you are able to accept the question from that section. So if we talk about the teaching aptitude guys, what we are going to select, one is the method of teaching guys. You have to see, this is the very important, always you are able to get the question from that section. Nature of the teaching, you need to point on that factors as well affecting of the teaching. If we talk about the evaluation of the system, learners characteristics as well the teaching aids. If you see all those topics, all those important topics, always you are able to get the question from that section guys. So that's why I suggest you, please do cover before going to exam, before going to attend the exam, do cover all those topics, so you're never going to miss any question from that section guys. Okay, so what topic we're going to cover in the first unit? Method of teaching, you need to remember, need to cover all those topics as well soft topic, as well you need to cover for the natures of teaching, factors affecting the teaching, as well evaluation system, learners characteristics, as well the teaching aids. If you cover all those topics, easily you are able to attend all those questions guys. Is that clear? So this is the important guys. What about the unit number 2? If you talk about that, unit 2 is the research aptitude guys. So what is the important for that section guys? So guys, if you talk about the research aptitude, having the lot of topic as well soft topic, but if you see here important topic, what I'm going to see here, research ethics, research methodology, types of the research, thesis writing, writing methodology of the research, as well the application of the ICT in the research. If you understand, if you learn all those concepts, easily you are able to solve all those questions guys, because always you are able to get question from that section guys. Is that clear? So let's see here, these all are the important topic from the research aptitude guys. So please do revise all those topic, just जो बताया हमने, research ethics, research methodology, types of research, thesis writing, writing methodology of the research, as well the application of the ICT in the research. So do revise all those concepts, all those topics, short topic including in this. So as well you able to know guys, somewhere you able to need for make the chart, we talk about the table, so do create, do make the short notes according to that guys. चार्ट बना के रखो, एज विल टॉक अबाउट दैट, टेबुलर फॉर्म में आ रहा था, टेबुलर फॉर्म में उसको बना के रखो, ताकि इजीली यू आर एबल टू रिकवर विद इन द 1 week, विद इन द 10 day of your exam guys. Okay, so please note down this point, note down this all topics, as well make a short notes according to that. Okay, read properly as well also, so it will going to help in exam guys. Okay, also you never going to miss any question if you got any question from the
from those topics, guys. Okay, so got about this 2 units, guys, unit 1 and unit 2. Let's move for the next. What we are going to see, let's talk about that, guys. Let's talk about that unit number 3. So what those unit number 3, guys? Comprehension. Always know, guys, it's a very important. Always 5 question are coming from that section, guys, comprehension से. So ये तो हम छोड़ नहीं सकते, guys. And how we are going to prepare for the comprehension, guys? इसके लिए आपको क्या करने हैं कि प्रैक्टिस करने हैं. यू नीड टू सॉल्व मोर देन 50 comprehension, guys. अगर आप इतना करते हो ना, मोर देन 50, इट मीन्स सपोज इफ टॉक अबाउट टूडे, guys. So if you talk about today is the 13 of Feb, and if you compare with your examination, we have the more than 3 month, guys. 3 month if you count, more than 100 day we have. So अगर 100 day, it means if you alternating, you solve one question, one comprehension full question, guys, easily you are able to analyze, easily able to learn all those things. That's why I suggest every day if you just take how much time, guys? 10 to 15 minutes. So every day solve one comprehension, guys. So it is only solution. And comprehension भी कौन? तो PYQ, guys, previous year question का जितना comprehension है सारे के सारे solve कर लो. एज मॉक टेस्ट if you have, so उससे जितने सारे comprehension है उसको solve कर लो. Because of you all to see, guys, you need to proper understanding. जैसे जैसे आप क्वेश्चन को solve करोगे, easily able to understand कि exact comprehension को कैसे solve करते हैं, guys. Okay, so you know, guys, if you are facing the issue, because you know कि everyone not good in the English, so you know कि there is the option for the paper 1 easily able to see in the Hindi as well the English, guys. So that's why it's benefit for you now. So if you comfortable in Hindi, just solve the question in the Hindi, just उसको language को change कर लो. As well comfortable with English, so let's start practice with only English, guys, not both, guys. I suggest you. So जो आपको सही लगता है इंग्लिश से इंग्लिश में करो, हिंदी में सही लगता है तो हिंदी में करो. So that's why, guys, therefore for easiest section of the paper 1, always, guys, always everyone score the 10 out of the 10 marks from the comprehension. If you talk about that, no one going to miss. If you are good in the English, if you good in the Hindi, अगर आपने अच्छे से practice किया है, easily able to going to be solve, easily able going to the mark correct for all 5 questions. You know, guys, for each question you are able to get 2 marks. That's why 10 out of 10 easily you are going to be get here, guys. Okay, so practice doing some mock question as before the exam. Obviously I told you minimum targeting for the 50 comprehension आपको कर लेने हैं, then easily you are able to solve in your exam, guys, because we have the limited time now. अल्टरनेट भी करोगे तब 50 आप तो comprehension कर ही लोगे. Okay, now if we talk about the communication, if we move for the unit number 4, guys, what we are going to see here in unit number 4, communication की बात करते हैं, guys. So if we talk about that, so communication में you know, guys, first need to see all those communication, जितने सारे types of communication है इसको अच्छे से कर लो. because you know what they asking, types of communication से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं. That's why you need to see all those types of communication, natures as well the characteristics of communication you also need to read, guys, properly. As well communication barrier, this is the very important, guys. communication barrier से क्वेश्चन आता ही आता है, no one going to stop. एक क्वेश्चन इसे आता ही आता है, 1-2 क्वेश्चन. As well effective classroom communication, it is also important, guys. So please note out all 4 topics as well, do revise, do prepare accordingly, guys. Okay, so easily able to mark all 5 questions from that section, guys. Not 5, if I told you ना, अगर आपने अच्छा से इस टॉपिक को कवर कर लिया, no one going to stop for 4 questions from that section, guys. If you got 5 questions, easily 4 questions तो आप करके आओगे. So that's why do prepare according to all those topics, guys, whatever I show here. Okay, so do learn here. Okay, is that clear? So prepare according to that, see all those types of communication. इसको अच्छे से चार्ट बना लो, guys. It's a better preparation, guys. प्रिपेयर स्ट्रेटेजी है कि अच्छे से चार्ट बना लो, टेबल फॉर्म में बना लो, जैसे आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल, उसको पिक्चर में क्या करो, रिप्रेजेंट कर लो, ताकि अब जब उसको ऐसा जगह रखो जहाँ इजिली और एबल टू रिमेंबर all days, guys. Okay, so got those clarification, you know. So let's move for the next, guys, what we're going to see. If we talk about that unit number 5, guys, so what is the unit number 5, guys? This is the very much as well as scoring chapter, guys, mathematical reasoning as well the aptitude, guys. If you are good, because guys, if we talk about now, you are अभी आप इजी से नेट को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर डिग्री एज वेल योर परस्यूइंग योर मास्टर, गाइज. सो इफ यू टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड सेक्शन, गाइज, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, यू ऑलरेडी स्टार्टेड दिस सेक्शन फ्रॉम योर स्कूलिंग, गाइज. क्या आप स्कूलिंग से ही पढ़ते आ रहे हो?
So everyone know about this concept, guys. So that's why for scoring the 5 out of 5 is the very easy in this section, guys. Maybe if you able to get one complicity कि वो क्वेश्चन जो आपके एप्टीट्यूड सेक्शन से मान जाओ कि थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन बेस है, समवेयर है, तो यू हैव स्किप 1 to 2 क्वेश्चन, तो नो वन गोइंग टू स्टॉप, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे, and also easy question you are going to get. So let's see if we talk about that, what the all those in important topic, guys. So coding and decoding, blood relation, distance as well direction, अल्फाबेट क्वेश्चन, मैथ की, ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया. इफ यू टॉक अबाउट द रीजनिंग का पार्ट हो गया, तो इफ यू सी गाइस, इफ आई टॉक अबाउट दैट, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड the classes for the aptitude section where I already cover the coding and decoding as well the ranking and ordering. If you talk about it tomorrow, I'm going to discuss about the blood relation. So guys, do watch all those classes because it will going to help with your preparation, guys. And whatever I deals, this all are important based on your exam, guys. So please do revise as well, do learn all those concept, okay, because with the concept I'm also giving the question, so you have get the good clarification about that, guys. So that's see here. So that's why I told you coding and decoding, able to see always question are coming from that section. Blood relations से क्वेश्चन तो आता ही guys, एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फाबेट से क्वेश्चन भी आता है, यू एबल टू सी कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट को भी घुसा देता है, तो यू आर एबल टू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द मैथमेटिकल पार्ट, गाइस, व्हाट एबल टू गेट हियर, एवरेज से क्वेश्चन रहता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, टाइम एज बट डिस्टेंस क्वेश्चन यू आर ऑलवेज गेट. आइदर अगर डीआई की बात करते हैं तो डीआई में देखो गाइस, कभी परसेंटेज से क्वेश्चन दे देता है, एवरेज में क्वेश्चन दे देगा, उसको डेटा को उसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है. आइदर यू आर एबल टू गेट सम सिंपल क्वेश्चन. तो अगर इसमें भी नहीं आया तो इजीली डीआई में तो क्वेश्चन 100% आता है कि एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज पूछ देता है, एज वेल इसको परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ देगा. सो ऑन दैट्स व्हाई यू नीड टू know the basic concept of that section, guys. So that's why I told whatever I selected topic is that important, guys. Okay, also go for here. Okay, so ये आपका नंबर सीरीज भी यहाँ पे हम नोट करते हैं. एक I have added one more thing, number series, guys. Number series is also important here, guys. So do add one more topic, number series. I'm also going to cover all those things, guys. So in the talk about the this week I have covering 5 to 6 section, and all are the much important because I covering first 5 here. Okay, बिकॉज इसी से क्वेश्चन आपको मोस्टली 2-3 तो बन ही जाते हैं इससे. वट एवर आई डिस्कस इन 1 वीक, 2 to 3 क्वेश्चन यू इजिली एबल टू स्कोर. ओके, सो दैट्स वाई मेक प्रायोरिटी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, वट एवर आई डिस्कस हियर, एज वेल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, गाइज. लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट यूनिट. वी टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 6 इज दैट लॉजिकल रीजनिंग, गाइज. सो यू एबल टू सी द सिलेबस. इफ आई टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, गाइज, यू आर एबल टू गॉट लॉट ऑफ सिलेबस, गाइज. बट सिलेबस में देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े. बट एबल टू सी there is only 4 thing I have selected here: Indian logic, analogic, deductive as well the inductive reasoning as well the structure of argument. Just do focus on that area, on that topic. No one going to stop, easily able to score 3 to 4 marks from here. अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो no one going to complete 100% syllabus, guys. 100% syllabus complete का किसी का if able to see, no one is scoring more than 250 marks. Everyone is scoring more than 230, 240 toppers we able to see here. So that's why 100% syllabus no one going to be completed here. Okay, so do revise all those topics, whatever I deals here, whatever I explain, all those topics much important as per your exam purpose, guys. Okay, so got till unit 6, guys. Is that clear? So let's see next what I'm going to discuss about, talk about that. So अगर बात करते हैं next में data interpretation, guys, able to see कम्युनिकेशन, DI, दोज आर मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको पेपर 1 में वो फिक्स है, 100% फिक्स है. उसमें 5 क्वेश्चन DI से, 5 क्वेश्चन आपका टॉक अबाउट दैट दिस वन, गाइस, कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, एज वेल आपको बात करें कंप्रीहेंशन की, नॉट कम्युनिकेशन, कंप्रीहेंशन की बात करें, सो 100% क्वेश्चन आर कमिंग, गाइस. आता ही आता है. तो कंप्रीहेंशन का तो हमने बता दिया, मिनिमम 50 प्रैक्टिस कर लो with the previous year question as well the mock test लगा लो. Eligible. Now if we talk about the DI, guys, so you able to see mostly you able to get the tabular form, guys. टेबल से रिलेटेड आपको DI क्वेश्चन होता है, बार ग्राफ क्वेश्चन होता है, as well the pie chart related क्वेश्चन होता है. So 3 section is the much important because if you see the last 10 year or 15 year, mostly you able to get question from the tabular form as well the pie chart. So tabular pie is the most important, but I added the graph. This is a bar as well also important. So guys, do practice all those questions and
No need to go anywhere, no need to solve any, just start the preparation from 2004 to 2023. जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ फॉर ऑल दोज सब्जेक्ट, आइदर इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड हो तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबका उठा लो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, जो भी का हो, जितना पेपर वन का एग्जाम हुआ सारे के क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दो. नो वन गोइंग टू स्टॉप यू, इजिली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कंसेप्ट एंड सारे के सारे फोड़ के आओ. क्योंकि यू आर एबल टू सी गाइस, सम वे आर एबल टू गेट द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द डीआई, बट मोस्ट प्रोबेबली यू आर एबल टू गेट द वेरी वी टॉक अबाउट दैट इजी क्वेश्चन गाइस. बच्चों वाला क्वेश्चन आपको डीआई में पूछ देता है, जैसे डेटा दे देगा, बोलेगा एडिशन बता दो, एवरेज बता दो, ये बता दो, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे आर गोइंग टू बी पिक हियर. सो दैट्स व्हाई फॉर स्कोरिंग solving 5 out of 5 question as well as scoring 10 marks out of 10 which is very easy from the DI section guys. ठीक है, सो ये कैसे होगा, तो जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है DI के सारे सॉल्व कर लो. ऑल एंड वेर यू गोइंग टू गेट गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाई गोइंग टू सर्च समवेयर, जस्ट गो ऑन द IFS का जो आपका IFS ऑनलाइन, जस्ट सर्च ऑन दैट www, जैसे करोगे .com यू आर एबल टू गेट ऑल द थिंग फ्रॉम 2004 से till it you are able to get all those previous year question. No need to pay anything, just freely you are able to get all the thing guys. So please visit this official website as well, enroll yourself with your phone number as well. Once you enroll with your specific course which one you preparing, so on that way once you authenticate with the dashboard, on that portal you are able to get one learn free section. So once you click on that tab, easily you are able to get all those details guys. So please go inside the previous year question as well, solve all the thing guys. Is that clear? So please do practice according to that and whatever I said DI as well the comprehension उसको previous year question से ही solve करो. और DI के लिए भी हमने बता दिया कि 2004 से 23 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो. एंड ऑल्सो एबल टू सी हियर गाइज कि अभी जैसे लास्ट 1 मंथ पहले 2023 का जितने सारे क्वेश्चन हुए थे, जितने सारे एप्टीट्यूड मतलब टॉक अबाउट द MR का क्वेश्चन हुआ था, वो MR एज वेल द LR, वो सारे के सारे मैंने सॉल्व किया हुआ है. इफ यू वांट टू सी यूट्यूब में we are able to get all those question as well the explanation. So if you want then also go as well the watch. वो कहाँ मिलेंगे आपको, तो यूसी नेट का जो पेपर वन का चैनल है IFS का, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे. ओके, गॉट द क्लैरिफिकेशन. नाउ वी कम फॉर द ICT information as well the communication technology. It's a very scoring and mostly is scoring for the computer science background who are preparing for the computer science. But don't worry about that. I have take lot of classes on YouTube. If you see on that paper one UGC नेट का पेपर वन का जो है IFS का, यू आर एबल टू गेट लॉट ऑफ क्लासेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड आई प्रॉमिस गाइस बिफोर 2023 दिसंबर के एग्जाम से पहले हमने जितना भी कंसेप्ट को बताया था एज वेल, जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किया, एग्जैक्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए थे. एज वेल बच्चों ने अच्छा सारे के सारे 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन को मार्क करके आए थे. एज वेल ऑल्सो दे आर एबल टू गेट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गाइस. सो दैट्स व्हाई आई प्रॉमिस. लेट्स सी, फर्स्ट सी एब्रिविएशन जितना सारा दिया, एज वेल टर्मिनोलॉजी जितना सारा एब्रिविएशन है, यू आर एबल टू गेट, यू आर एबल टू रिवाइज ऑल द थिंग. तो मैंने ICT का भी फ्री में क्लासेस यू आर टू सी यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे. सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने लिया हुआ है. बेसिक्स ऑफ इंटरनेट इज नीड टू रिमेंबर. ईमेलिंग, जितने सारे ईमेलिंग से रिलेटेड हो गए क्वेश्चन, कितने उसके आपको ईमेल प्रोटोटाइपिंग, कितने सारे मतलब ईमेल से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट यू नीड टू रिमेंबर. वायरस से तो रिलेटेड करना है कि ऑलवेज एबल टू गेट मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं वायरस से रिलेटेड. सोशल मीडिया से रिलेटेड यू नीड टू लर्न समथिंग अबाउट द सोशल मीडिया एज वेल. मेमोरी से तो क्वेश्चन नो वन गोइंग टू वेस्ट ऑफ, ऑलवेज यू आर एबल टू गेट मेमोरी से क्वेश्चन. जहाँ पे रैम रोम आपका CPU की बात कर ले, कैश मेमोरी की बात करें, तो इन सबों से आपको कैश हो गया आपका, इन सबों से क्वेश्चन आता ही है. नो वन गोइंग टू वेस्ट ऑफ गाइज. ठीक है, सो दैट्स वाई डू रिवाइज ऑल दोज concept according to that whatever I cover here. All those topic is much important as per your exam purpose guys. So no need to learn extra thing, just read read properly here whatever I discuss all those topic, so easily are able to get the good marks guys. Also able to see in the, if you who are preparing with computer science, so I also make one separate video as well. Also I discuss there कि all those important topic आपका पेपर 2 का कौन कौन से होने वाला है. इफ यू टॉक अबाउट दैट कंप्यूटर साइंस का, तो हमने उससे भी एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ. सी इफ यू फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, प्लीज गो एंड वॉच ऑन द यूट्यूब, यू आर एबल टू गेट. ओके, सो गॉट दिस क्लैरिफिकेशन गाइस. क्या क्या आपको करने हैं,
आईसीटी में, तो जर जनरल एब्रिविएशन जितना सारे, बिकॉज यू नो कि ऑलवेज यू आर एबल टू गेट एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको सेपरेट पूछ नहीं तो कभी क्या कर देता है, मैच करने के लिए दे देता है, एज वेल 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन है जो गलत अब्रिविएशन है, कौन है जो करेक्ट है। सो दैट्स वाई यू आर एबल टू एक्सेप्ट मोर देन 5 एब्रिविएशन। अगर वो एक ही क्वेश्चन में पूछ दिया कि वो उसमें कौन है जो गलत है, तो 3 सही होगा, एक गलत होगा, तो अब जब तक आप नहीं जानोगे उसके बारे में, तो यू कांट एबल टू से ना कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। तो दैट्स वाई जनरल एब्रिविएशन का जितना मतलब दे आज की, जैसे मान दे रैम स्टैंड फॉर, यू नो इफ यू नो अबाउट द रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी देन यूजुअली एबल टू मार्क ना, अगर नहीं जानते हो तो कैसे मार्क करोगे। तो दैट्स वाई यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द जनरल एब्रिविएशन एज टर्मिनल, बेसिक ऑफ इंटरनेट आपको देख लेने, टाइप्स टोपोलॉजी आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स हो गया, टोपोलॉजी, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। सो डू रिवाइज ऑल दोस कंसेप्ट, no one going to stop, easily you are able to score full marks guys. 5, if we can say easily you are to solve 5 out of 5 question, as well as you are able to get 10 out of 10 marks from that section guys. Okay, let's move for the next concept. So what we are going to see here guys, what is the unit number 9, people development as well the environment guys. So what is important on that area guys, if you want to see here, so if we talk about that, let's see guys, if you able to see, अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे उसमें, अगर यूनिट 9 की बात करें, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, बट लेट्स सी हियर आई एम सिलेक्टेड जब 5 to 6 टॉपिक्स हियर, एबल टू सी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, एबल टू सी सॉरी पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन, एबल टू सी रिन्यूएबल एनर्जी, एबल टू सी गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, एज वेल द व्हाट गाइस natural hazard, as well the mitigation. So guys, this is the important guys, if we talk about the natural hazard, also question are coming, so please do prepare with these topics, easily you are able to score more than 3 to 4 क्वेश्चन, तो easily आप कर लोगे इससे, ठीक है। सो दैट्स वाई ज़्यादा पैनिक नहीं होना, यू हैव द सफिशिएंट टाइम गाइस, सो प्लीज गो विथ दिस टॉपिक्स एज वेल, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट गाइस, इज दैट क्लियर। सो इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट 9, दिस ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, all those 5 are the very very important, revise according to that, then easily you are able to mark all the thing. Now if we talk about that unit number 10 guys, what the unit number 10, higher education system guys. So more lot of aspirants get confused, they are unable to solve question from that section guys, but here let's see, if you able to see the higher education का अगर आप syllabus देखोगे तो बहुत सारे syllabus, बहुत सारे content है, तो what able to see, just need to revise according to the educational in, if you to see the incident India, government scheme related to the education, technical education, value education, important institution, always question are coming from institutions related, important government committee was set up related to the education, as well the new education policy, ये सबको अच्छे से कर लो, सारे कंटेंट को, क्वेश्चन इसी से रहेंगे, easily you are able to mark all those things guys, clear guys. So here you are able to get all those clarification whatever I see. So guys let's see here, this all are the important, हमने यहाँ पे 10 यूनिट को यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए। सो प्लीज डू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट, ओके गाइस। सो इजिली आर एबल टू get all the things, so we have the sufficient time, we have the more than 3 month time for our preparation. So guys make prepare according to the topics, so easily you are able to mark all those questions, easily able to get good marks in the paper 1 if you talk about the more than, okay. So let's see in the next class. So guys if you find this is the important for you, please do share with your friend colleagues, so they can also get benefit, okay. So we have the preparing for UC NET exam, so please share with your friend, also do subscribe this channel, so you are able to get the new video related to this concept as well, any upcoming classes notification guys. So okay, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, हैप्पी लर्निंग विद IAS।